As we have studied in a previous video of sets and we have seen different kind of numbers. So in this video we are going to cover what is rational numbers and what are irrational numbers. और irrational numbers से related मैंने बहुत ही important facts और एक story cover up की जो वीडियो के end में है, तो वीडियो को end तक जरूर देखना. So like we already know that there are different kinds of numbers. So there are natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers and all are categorized under the category of real numbers. तो natural number जैसे कि हम जानते हैं they start with 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. And whole numbers जब Indians ने zero discover किया था, so the numbers were finally complete. That is why we call them the whole numbers. So zero is included in the whole number and the natural series. फिर आते हैं इंटीजर्स जो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, क्योंकि बाद में पता चला था हम नंबर को नेगेटिव में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स नहीं होते हैं. तो फिर हमें इंटीजर्स के बारे में पता चला. एंड देन कम्स द रैशनल नंबर जिसे हम रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज इन द P/Q फॉर्म. और जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं सो वी मोस्टली गेट अ डेसिमल नंबर. सो डेसिमल और रेशियो को हम कहते हैं रैशनल नंबर. And all this, even irrational, is categorized under the category of real number. So let us begin by understanding what is rational number. तो rational number को समझने के लिए एक स्केल को इमेजिन कर लेते हैं. तो स्केल में जैसे कि आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and so on. तो 1 और 2 के बीच में स्केल में मोस्टली 10 नंबर्स तो होते ही हैं. सो लाइक फॉर एग्जांपल 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन. लेकिन 1.1 और 1.2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि 1.11, 1.12 एंड 1.13 एंड सो ऑन. और सिमिलरली इनके बीच में ही फिर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं. तो यही रैशनल नंबर्स है, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर विच इज बिटवीन टू होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. सो दीज आर रैशनल नंबर्स जिसे हम डेसिमल और रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इससे मैं रेशियो में एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 11/10. तो 11/10 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर हम डिवाइड कर देंगे तो एज 1.1. तो दैट इज आवर रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो एंड इन द फॉर्म ऑफ अ डेसिमल. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि 5/2. तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5. तो ये दोनों के दोनों जो नंबर है ये डेसिमल आने के बाद स्टॉप हो रहे हैं, लाइक द डेसिमल इज एंडिंग, द डेसिमल इज नॉट गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 1/3. तो जब हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, सिंस 3 इज एन ऑड नंबर इन द डिनोमिनेटर, तो आंसर आता है 0.3333 एंड सो ऑन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5/3. आंसर आएगा 1.666. तो जब डिनोमिनेटर में ऑड नंबर होते हैं 3 and 7, सो वी गेट नॉन टर्मिनेटिंग. But all these two are categorized under rational number. तो ये थे rational number. So now I hope the concept of rational number is clear with all of you. Now let us begin understanding what is irrational numbers. So irrational numbers are the most beautiful numbers because irrational number कभी end ही नहीं होते. And you know the famous irrational number, that is pi, जिसे हम मोस्टली 3.14 के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन उसकी अगर हम पूरी सीरीज को देखें, सो लाइक फॉर एग्जांपल हियर आई हैव द फर्स्ट 100 डेसिमल्स ऑफ पाई, बट पाई की सीरीज इज ऑन गोइंग. द वैल्यू ऑफ डेसिमल्स ऑफ पाई नेवर एंड्स. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इररेशनल नंबर. और फॉर एग्जांपल रूट ऑफ एनी नंबर, बट दैट इज अ नॉन परफेक्ट रूट, जैसे कि फॉर एग्जांपल √2, क्योंकि √2 परफेक्ट रूट नहीं है, वी कैन नॉट सॉल्व इट. तो √2 को भी जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, सो वी गेट एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ डेसिमल जिसमें डेसिमल कभी एंड नहीं होते. लाइक फॉर एग्जांपल अगेन आई हैव द 100 डिजिट्स ऑफ डेसिमल ऑफ √2. सो दैट इज एन इररेशनल नंबर. लेकिन हम जैसे √2 को जानते हैं सिर्फ पहले 3 डिजिट से, दैट इज 1.41. सो दैट इज इररेशनल नंबर. तो क्लासिफाई करके आपको मैं 2 कैटेगरी में बता देता हूँ कि व्हाट इज एन रैशनल नंबर एंड व्हाट इज एन इररेशनल नंबर. जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.5, क्योंकि डेसिमल एंड हो गया, इट्स अ रैशनल नंबर. द सेकंड एग्जांपल, भले कितने भी डेसिमल हो लेकिन डेसिमल एंड हो रहा है, सो दैट इज आल्सो एन रैशनल नंबर. देन फॉर एग्जांपल √4. अभी √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है, बिकॉज √4 को सॉल्व करके आई विल गेट एन आंसर दैट इज 2. सो इट इज अ रैशनल नंबर. एंड 11/3, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो मुझे आंसर आएगा दैट विल बी रिकरिंग, और रिकरिंग आएगा डेसिमल, तो वो रैशनल में कैटेगराइज होगा. नाउ इररेशनल नंबर आई कैन टेक एन एग्जांपल 1.2343 एंड सो ऑन. तो जब सीरीज कंटिन्यूस होती जाती है, कंटिन्यूस, सो वी कॉल इट इररेशनल नंबर. और 1.523 एंड सो ऑन. नाउ डॉट 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 मींस दैट द सीरीज इज गोइंग ऑन, सो दैट इज एन इररेशनल नंबर. एंड लाइक आई सेड, द नॉन परफेक्ट रूट्स, that is for example √2, √3, √5, √6 and so on. All these non-perfect roots are known as irrational numbers.
Okay, so now let us begin the last part of the video, that is the story of square root of 2. So square root of 2, it dates back to the time of Pythagorean era. Pythagoras theorem हम सब जानते हैं, the famous Pythagoras theorem, that is hypotenuse square is equal to one side square plus other side square. So Pythagorean was a cult. In the Pythagorean cult, there were many believers जो Pythagorean cult को follow करते थे. It was like a religion at that time. Because these people worship mathematics, they believed in the magic of numbers. They thought that everything in the universe can be expressed in terms of numbers. Like they even give gender to the numbers, like this is a male number, this is a female number. And they believe in all sorts of rituals at that time, like that was literally controversial. तो Pythagoras को follow करने वाले काफी लोग थे. Blindly they used to follow Pythagorean and worship him because these people were crazy about numbers. So root 2 की irrationality तब discover हुई थी when there was a guy known as Hippasus. तो उसने express किया कि for example, like if you in the Pythagorean theorem, if you take the two sides of triangle as unit measure, अगर हम उसे 1 और 1 ले लें, तो Pythagoras theorem के हिसाब से the answer is going to be square root of 2. And square root of 2 is an irrational number, like it cannot be expressed in terms of any decimal or any digit, like it is a never ending series. And that was like, danger to those Pythagorean people because they thought that everything in the universe can be expressed in term of a number. एक fraction के form में हम उसे express कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक rational number की तरह express कर सकते हैं, लेकिन ऐसा number जो कभी end ना हो, irrational number, they could not believe like this kind of number can even exist. So this Hippasus, like it is said that he proposed this theory, disclosed that in a board to the Pythagorean cult and told them that yes, I'm going to tell the discovery to the world and I'm going to disprove your Pythagoras theorem because you cannot show that such kind of irrational numbers can be expressed. तो कहा जाता है कि the Pythagorean cult, the members of the Pythagorean cult threw Hippasus into the river and he drowned and died. So to protect the identity of rational numbers, they killed Hippasus. So that is the story of root 2 and irrational numbers. कि numbers को identity को protect करने के लिए they even killed a person. One more interesting fact about root 2 is that we know our A4 size paper. So we all use A4 size paper. So if you take the length of the longest side and you take the length of the shortest side, and if you take a ratio, the ratio is going to be square root of 2. So let's take example like A is longest side ले लेते हैं, B shortest side ले लेते हैं. अगर आप A और B करोगे ratio, तो you will get the answer to be root 2. And if you fold the paper, let's say आप A4 size paper को fold कर लेते हो, so we get an A5 size paper. So the shortest side is now the longest side and the longest side is now the shortest side. उल्टा हो जाएगा, तो लॉन्गेस्ट साइड को B ले लेते हैं, शॉर्टेस्ट साइड A/2 हो जाएगा क्योंकि वो लॉन्गेस्ट का आधा हो गया, A का आधा हो गया तो A/2 हो गया. अगर हम वापस से लॉन्गेस्ट साइड अपॉन शॉर्टेस्ट साइड का रेशियो लें, सो वी आर गोइंग टू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो ये क्यों करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेंटेन द प्रोपोर्शनैलिटी. हम पेपर की प्रोपोर्शनैलिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, दैट इट शुड बी स्केल्ड अप, लाइक स्केलिंग कर सकते हैं हम उसकी. So in order to prove that the ratio is square root of 2, let's say that both the ratios are equal. तो इस केस में longest side है B and the shortest side is A/2. So let's say that these two ratios are equivalent. तो equivalent के लिए थोड़ा इसमें mathematics apply करते हैं. Let's cross multiply. So B and B will be cross multiplied. We will get B square and A and A/2 will be multiplied. So we will get A square upon 2. तो अभी वापस से बी स्क्वायर को नीचे ले आते हैं. सो वी विल गेट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये जो 2 था वो ऊपर चला जाएगा. और अगर स्क्वायर रूट लें सो वी विल गेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो लाइक एज सेड कि जो A4 साइज का रेशियो था ए अपॉन बी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. So this proves that root 2 is present everywhere in our lives and that is an irrational number. That is a never ending decimal fraction. It is never going to end but still it ends. So that is irrational numbers. And if you like the video, please click on the like button, subscribe to the channel if you want to see more interesting videos like that. Thank you so much.